Hi guys, this is Nikhil from Ethans. I have Amit and Jatin with me on the trainer side. Okay, we'll wait for a minute or so. We are expecting few more people will start within 2 minutes. Meanwhile, if you have any questions, you can ask. Can you hear me? Can you see my screen? देख लो and answer questions section में yes no करके vote कर दो बस. If you can see the screen and if you can hear me. Okay, so Avinash says he can hear me, he can see the screen. Great. Bhushan, thank you. Mayur says yes. Okay. Alisha says yes. Okay, Digvijay, so you cannot speak. आप लोग सब mute पे हो. All the attendees, you guys all are on mute. That is how we've created the webinar. If you want to say anything, अगर आपको कुछ question पूछना है तो आप questions में डाल सकते हो. Okay, guys. So first of all, thank you for joining. My name is Nikhil Sonane. I am a trainer at Ethans. At Ethans, I am teaching Python with machine learning. Okay, so I'll just start with a quick round of introduction, and then I'll go through the agenda. क्या करते हैं, कैसे करते हैं at Ethans. Okay, and then yes, Digvijay, thank you. Yes, okay. And then we'll get started. Okay, so my name is Nikhil. Total 10 years of experience. Most of my career has gone into Python as a Python developer. Currently, I'm working as a data scientist at one of the product-based companies in Pune. At Ethans, I take Python with machine learning. I usually take weekend batches, okay? So weekend classroom trainings. Apart from that, online training, uh, corporate trainings, whatever it is, I conduct it, okay? Here, right now, what we are going to discuss about is Python plus machine learning. Okay, so as this coronavirus thing has happened, okay, so what we've done is we've completely, for now, temporarily stopped our classroom trainings because of the government instructions. But we are getting lots and lots of requests for. Uh, okay, so Ankit says, which will you teach like this? No. Here हम लोग for a demo we are not going to for demo purpose I'm using this webinar GoToWebinar, but for this thing for classrooms हम लोग Zoom use करेंगे. Okay, we've got Zoom enterprise license and हम लोग वो use करते हैं. ये हम लोग just webinar के लिए, this is really easy for us to manage the questions and all, that's why हम लोग ये use कर रहे हैं. Yes, all right. So the entire course is basically divided into two parts. First part is Python and second part is machine learning. Okay, what you see in front of you is the timetable or timelines for Python with classroom training. Okay, but हम लोग यहाँ पे classroom नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं online training. Okay, so these numbers are going to change. Okay, so
The most commonly asked question. So, जैसे Rahul has asked me, I don't know any programming language. So how can I proceed? Okay. So guys, so first of all, अगर किसी के मन में ऐसा mental block होगा that I am not from IT background or I don't know any programming language or I am totally new to this, will I be able to do it? So the answer is yes. Okay. Python is one of the easiest language. Okay. And it doesn't require any previous knowledge of any other programming language. जैसे for C C P P it is there कि C आता होगा तो ही C P P देख सकते हो. Okay, Python में ऐसा कुछ नहीं है. If you are uh, not from IT background, if you don't know any programming language, that is also fine. Okay, so in Python part, okay, so what we are going to do is we here take 100% hands-on training. Okay, 100% practical session होने वाला है. मतलब you need to have a laptop of your own. Okay, जहाँ पे हम लोग Python install करेंगे and we'll be doing everything hands-on. Okay, so to begin with, Python क्या है? uh, what is Python? किसी को पता है? Okay, so Prathamesh has a question. Petroleum engineering student here. Can I do the course? Yes, definitely you can do. Okay, so petroleum engineering in case of anything to do with mining or petroleum, okay, ये सारे लोगों में Python के applications बहुत सारे हैं. Okay, so if you are going for machine learning, yes. Okay, so Alisha has a question. She says, what are the system requirements for installing Python? Okay, so guys, Python is platform independent. Okay, मतलब Python को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, सॉरी. ओके, या फिर व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर हार्डवेयर. Python doesn't mind. Okay, so if I copy some Python scripts from my machine and मैं आपको पेन ड्राइव में आपके मशीन में देता हूँ and आपके मशीन में Python already installed है, तो the scripts are going to run fine. Okay, so no specific operating system required या फिर no specific hardware required. Python को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. In fact, if you are using Mac, Python by default आता है. If you are using Linux, in all the flavors of Linux, Python by default installed आता है. You don't even have to install it. It is only in Windows machine that you have to install Python. Okay, now okay, so Avinash says I don't know anything about Python. uh, Okay, so Ajinkya has a question. Ajinkya says, does Ethans provide placement guarantee for experienced persons? All right. So no, and hear me out, and I'm saying it out loudly and very clearly. Okay, we do not give any placement guarantee. What we give is placement assistance. Okay, placement assistance का scope is as follows. Firstly, we will help you in writing your resumes with respect to Python. Okay, with respect to Python क्या है? Okay, so I get a lot of people. Let's say some person is from manual testing background, okay, and 4-5 साल he's worked in manual testing. At Ethan's, he's learned Python with automation, and now he has to move or he wishes to apply for automation interviews. Okay, so उसके लिए if you write all of your manual testing experience in your resume, obviously you're not going to get a call. Okay, so uske liye how do we convert our existing experience into Python? Okay, uske liye aapko kya self study karna padega and kaise karna padega, all of that. Okay, so firstly resume writing. Uske baad what we do is we'll link you up with people who are recruiting for Python. Just now we are like almost 5 years old institute in Pune, right? So we have a very good reputation in the fraternity. Okay, so just if Zensar has some openings, so Zensar will come and tell us that we need maybe 10 people who are trained on Python with machine learning. Okay, and वो requirement हम लोग आपको जैसे का तैसा forward करते हैं. Okay, उसमें Ethans का कोई role नहीं है. So what you do is you go to Zensar, you apply in your referral, you just mention that you are from Ethans, and फिर वहां जाके आप इंटरव्यू कैसे देते हो एंड ऑल वो सब आप
कर सकते हो. Okay. Wow. So Sridhar has a very nice question. Okay. Python सीख के करूँ क्या? So he says, what are the opportunities after Python? Lots and lots of opportunities. Okay, so Python is full of opportunities. So I'll give you an example. So if you are, let's say, एक तो हम लोगों ने देखा, if I am from manual testing background and I need to move for automation, okay, so I can work on Python with automation. Okay, so जैसे Java Selenium सुना होगा, right? Java Selenium works with Java. वैसे ही Selenium can be used in combination with Python. Okay, now there is something different that is happening with respect to testing in market. Okay, so ज़्यादातर we are now inclined towards backend testing. Okay, मतलब API testing हो गया या फिर automation में database automation हो गया, things like this. Okay, UI को हम लोग कम preference देते जा रहे हैं. Why? Because every now and then the UI of your website or web application is going to change, but backend rarely changes, right? So मेरा UI maintain करने का framework is exhaustive. Okay, वही मेरे को backend में बहुत कम time लगता है maintain करने के लिए. Okay, so if you are from testing background, you can go for automation. If you are from development background, जैसे if you are from, let's say, technology, जैसे COBOL developer हो गया, okay? आजकल COBOL के jobs are very difficult. Okay, so you can move on to Django framework. Okay, Django is one of the most famous framework जिसका हम लोग Ethans में training provide करते हैं. So Python के बाद you can go for Django and you can actually leverage your existing experience as a developer. Okay, if you are from networking background, system admin के तौर पे आप काम कर रहे हो and you'd like to move into DevOps. Okay, so DevOps में you would need to learn uh, orchestration tools like Chef, Ansible, Puppet, Jenkins, right? ऐसे tools सीखने पड़ेंगे. In addition to that, ये सारे tools से coordinate करने के लिए you need to know one language, जो होता है Python. Okay, so if you are from networking background, you can go for DevOps. Okay, अगेन क्लाउड टेक्नोलॉजीज AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया, सबके लिए यू विल नीड पाइथन. इन एडिशन टू दिस, ओके, इन एडिशन टू दिस देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप इन मार्केट, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, AI हो गया. सो फॉर ऑल ऑफ दिस, ये जो भी 8-10 नाम मैंने लिया, इनका सबका प्री रिक्विजिट है पाइथन. Okay, and that is what we are here for. Okay, so this course is for Python plus machine learning. But let's say someone is from networking background and he would like to go for DevOps, तो क्लासरूम में आपको कैसा करना पड़ेगा? Python complete करने के बाद for DevOps you can move to DevOps batch. Okay, if you are interested in automation, तो यहाँ से Python होने के बाद you can move on to automation batch. Okay, so as I said, lots and lots of opportunities after Python. All right, so again, another question, what is the difference between data analytics, data science? All right, I have started, but demo is not started. Okay, ask करिए offline हो गया. Okay. Okay, I have an experience in Informatica. So what will be better for me? Okay, so if you are from database background, okay, so database से related काम like to continue, तो आपके लिए data science machine learning best है. All right. Okay, so are you going to cover any frameworks related to Python? All right. So framework in the sense a development framework के बारे में बात कर रहे हो या इसके लिए automation का? I'm working as manual tester for automation. Should I start with Selenium or Python? Okay. So Selenium के साथ काम नहीं कर सकते हो. Selenium in combination you'll have to use with some language, right? तो आपको language आना जरूरी है. So your language comes first. Okay.
How can we develop my own app and publish it on Google Play Store? In other words, which course should we learn to do so? Okay, the Android development. I have completed C++. Will it be helpful in learning machine learning? Okay, C++ के साथ कर क्या रहे हो? Depends on that. I have completed PG in 17. Is there any chance in IT sector? Yes, why not? But you have to be quick because ये कोरोना already सबकी वाट लगाने को चालू कर दिया है. All right, so questions. Okay, guys. So as of now, जितने questions थे, I've already answered those. अगर आपको कोई भी question आता है during the demo and all, you can keep on posting. I'll take them on and off. Okay. All right. So this course is going to be 100% practical training, hands-on होगा. Okay. So यहाँ पे मैं आपको definition dictate कर रहा हूँ, आप definition लिख के ले रहे हो, notes ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, right? Everything is going to be hands-on. So here we'll be covering over 52 exercises and 100 plus assignments. Okay, so these 100 plus assignments, जैसे ही अपना course चालू होता है, I'll be sharing these 100 plus assignments with you straightforward. Okay, so जैसे मैंने आज अगर कोई टॉपिक सिखाया, so your job is कि कॉल होने के बाद या मीटिंग खत्म होने के बाद you have to solve the assignments from that टॉपिक के लिस्ट में से एंड यू हैव टू मेल इट टू अस. एंड ये जो 52 हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस है, ये हम लोग क्लास में करने वाले हैं. ओके, नाउ these examples जो भी हम लोग programs देखने वाले हैं, so these are all the interview questions. Okay, so we've trained almost 5,000 students till now. Okay, so almost हर कंपनी में कोई ना कोई जाके इंटरव्यू दे के आए, be it as common as or be it as special as Facebook. Okay, so हर कंपनी में बच्चों ने जाके इंटरव्यूज दिए and we've got the collection of interview questions. Okay, so कौन से प्रोग्राम्स पूछते हैं, कैसे पूछते हैं. Okay, so ये जो सारे प्रोग्राम्स है वो these are the same. हम लोग जो इंटरव्यूज में पूछते हैं, हमसे जो पूछे जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्लासरूम में करवाते हैं. Okay, apart from that, I personally have a habit of telling इंटरव्यू क्वेश्चंस टॉपिक वाइज. जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अराउंड क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, आई कीप ऑन टेलिंग दोस. ओके, सो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास नोट्स के साथ सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं. ओके, okay, so one of the question is, will you provide recording? You want recording of this call? आई डोंट नो. जतिन, हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं क्या रिकॉर्डिंग? श्योर देयर, बताओ. Class recording, na? Class recording, yes, we are going to provide all the class recordings. No, not the class recording. ये डेमो का रिकॉर्डिंग शी इज आस्किंग अबाउट. अभी जो चालू है उसका. What we have is, we are going to have ये जो अपना YouTube का channel है ना, Ethan's Tech का, so we are going to save all the recordings right over there. तो YouTube के चैनल पे डाल देते हैं डायरेक्टली पीपल के नेट. यस, सो नीरव, यस, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग. ऑलराइट. Okay, will this scenario of corona have effect on IT? Of course, yes, it is going to have. And for that we have to be ready by by learning multiple skills. Okay, so obviously एक अगर specific skill को पकड़ के बैठोगे, okay, and अगर वो skill obsolete हो गया, तो obviously you are not going to be a value added to the organization, right? ऐसे ही होता है, right? So it is always good to know multiple things, right? Okay, so as I was saying, so all of these interview questions and all, तो ये बहुत help करता है आपको आगे जाके interview के लिए ready होने में. Okay, so the agenda of all of this is to teach you Python in such a way that you would be able to answer interview questions. Okay, आपको interview ready करना है. Okay, that is the agenda.
uh, apart from this, so when our course starts, okay, so what we do is हम लोग आपका एक बैच बना के, so we create a WhatsApp group, okay, so वो WhatsApp group हम लोग यूज करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए, क्लासेस के टाइमिंग्स एंड ऑल, okay, things like this, assignment share करने के लिए and all, okay. Once our course is completed, okay, once we reach towards end, so what I do is I'll add you in the main WhatsApp group. Okay, so when I say main WhatsApp group, what I mean by that is हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ईथन्स में जितने भी ट्रेनर्स हैं, ओके, बी द ट्रेनर फ्रॉम डेवऑप्स बैकग्राउंड या फिर एडब्ल्यूएस या फिर जो कुछ भी है, ओके, सारे ट्रेनर्स का और सारे स्टूडेंट्स का, आज तक के हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबका मिलके व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल है. सो अगर लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, okay, and you are struggling, if you are stuck, तो आप उस पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो. Okay, if let's say I am busy, okay, and let's say some other trainer is available, तो वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा. Okay, so what we are trying to do is we are trying to build a community, okay, जहाँ पे सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, and trust me, it is working out really well. Most of the times, like 99% of the times, हम लोगों को involve भी नहीं होना पड़ता. It is other students who have done the same thing, they'll come forward and they'll help you out. Okay, इससे भी बड़ा एडवांटेज हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप का है कि हम लोगों को वहां पे जॉब पोस्टिंग्स की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है. तो वहां पे कोई ऐसे स्पैम फॉरवर्ड नहीं करता है, टीसीएस नीड्स 200 freshers and persistent wants 500 freshers, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे. इट इज अ वेरी प्रोफेशनल group and वहां पे all the informations are first hand information. I, being a trainer at Ethans, मेरे को मेरा current job, मेरा current which I have managed to obtain through one of our Python groups. Okay, so it is really helpful. All right, so having said that, okay, अगर आपको ऑफिस में दिखाने के लिए आपका अगर फी रीइंबर्स होने वाला है, so हम लोग आपको प्रॉपर जीएसटी वाला रिसीट भी देंगे that you can submit in your office for the reimbursement. If you need a certificate for IJP, most many of the companies अगर आपको internal job switch मारना है, okay, so they'll ask for some kind of certification. Okay, so हम लोग at Ethans will provide you Ethans certificate also, वो भी आप use कर सकते हो. Okay, in addition to that, we'll have two mini and one major project. Okay, now this is where the advantage lies. Okay, so many a times I get people who are like, sir, I have been tagged to a project which needs Python, but I don't know anything about it, तो कैसे कर सकते हैं? या फिर I get people who are just out of interest. इन दैट केस ये जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है, ये आप खुद के चॉइस का, जो whatever you want you can choose and I'm going to help you out with it. Okay, if you do not choose, तो obviously I'll give you a topic of mine, but अगर आपको ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट का पीओसी करना है या कुछ सबमिट करना है ऑफिस में, ओके, या फिर यूनिवर्सिटी में मे बी आपके, so you can choose a topic of your choice and I'll help you out with it. All right, a lot of questions have accumulated. Let's go through questions. Will you cover any of the Python concepts in the demo? No. Python concepts in the demo? No. So this demo is only to give you a walkthrough of what the Python course and what the machine learning part is going to consist of. तो यहाँ पे मैं Python start नहीं करने वाला हूँ. Python I'll be starting on Monday morning 8:30. Okay, this course is going to be a weekdays course. Okay, morning 8:30 to 10 we've kept it. Okay, because as we all are working from home, right, so we need to log in by 10:30. So that is the reason हम लोगों ने 8:30 to 10 का timing रखा है. Okay, by the way, इन द पाइथन कोर्स हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. मतलब बेसिक इन द सेंस पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन डाउनलोड कहाँ से करना है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. ओके, व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, ये लेवल से.
very grassroots level से we are going to start. Okay. Okay, so classes will be online or classroom going forward. Okay, Nirav. So सुनो, we don't know ये लॉकडाउन का इशू कब सॉर्ट होने वाला है. ओके, तो टिल देन हम लोग ऑनलाइन ही करने वाला है. एंड ऑनलाइन होने की मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हम लोग ऑनलाइन ही कंटिन्यू करने वाले हैं. Okay, what will be the duration of course by Bhushan? All right, so the 54 hours that you see over here, okay, so this is with respect to classroom training, okay, but online, and this is only for Python, guys, but for online training, this is going to be a lot less. Okay, this is going to be a lot less. So it is going to be approximately 40-45 hours for Python and another 25-30 hours for machine learning. Okay, ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी ये हम लोग सिर्फ पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं. Once Python is done, I'm going to touch base with machine learning. My question is that after passing time, companies change their interview questions. Uh, Questions means how much time does it take? Changing interview question by Roshni. Uh, okay, Roshni, good question. See, क्वेश्चंस चेंज होते हैं बट कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हूप्स कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो जावा में है वही डॉटनेट में है, वही सी प्लस प्लस में है और वही पाइथन में भी है. ओके, सो कॉन्सेप्ट्स आर नेवर गोइंग टू चेंज. ओके, वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दे आर गोइंग टू ट्वीक द क्वेश्चंस, राइट. एंड पाइथन का दुनिया बहुत छोटा है. पाइथन हैज इट्स वेरी स्मॉल क्यूट वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. ओके, सो मेनी अ टाइम्स दिस हैज हैपेंड विथ मी कि मैंने कोई सो इफ सम स्टूडेंट आस्क्स कि मैं जा रहा हूँ कल कैलसॉफ्ट में इंटरव्यू के लिए, व्हाट शुड आई प्रिपेयर. ओके, एंड आई हैव गिवन हिम सम क्वेश्चंस. ओके, सो मेनी अ टाइम्स ऐसा हुआ है नॉट ओनली द क्वेश्चंस वर सेम, उनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ. ओके, so yes, whatever you've raised is absolutely right, but if the concept is clear, तो questions answer करने में कोई problem नहीं होता है. Is Ethan's providing online course in quarantine time? Yes. Okay. So see, quarantine हुआ है. We all being responsible citizens, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं. Okay. But that doesn't mean कि हम लोग अपना time waste कर दें. Right. So 21 days is a good amount. हमारा टाइम ऑलरेडी चला गया है. हमारा ऑलरेडी मशीन लर्निंग का फर्स्ट क्वारंटाइन डे से बैच चालू हो गया है. ओके, सो यू गाइस आर इन द थर्ड लॉट. तो आगे भी क्वारंटाइन एक्सटेंड होगा तो अपना बैच तो चलेगा. यस, यस, सो वी आर एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ एवरीवन बीइंग एट होम. ओके, if it happens that lockdown gets over and our exams start, during the exam will you continue? भूषण, this question is from भूषण. देखो भूषण, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकता है. Okay, if you've got exams, the most I can do for you is I can help you out. Okay, I can help you out in couple of ways. Okay, so see what I can do is मेरे पास हर टॉपिक का रिकॉर्डिंग है and whatever online class we'll be taking, everything is going to be recorded and you will be sent the link. Okay, so first thing आप वीडियोस देख के कर सकते हो. ओके, रिकॉर्डिंग्स देख के. सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज you can get in touch with the reception. Okay, reception पे either you can get in touch with Mayank or Rashmi. Okay, and you can specify your batch name. का लेक्चर रिपीट चाहिए. ओके, सो अगर किसी दूसरे बैच में वही लेक्चर रिपीट हो रहा है, लेट्स से अमित सर के बैच में 2 दिन बाद वही टॉपिक रिपीट होने वाला है, तो हम आपको नोटिफाई कर कॉल ज्वाइन कर सकते हो and you can learn it from there. Okay, not only in case you miss the class, but agar if there is any topic that you've learned, okay, जो आपने attend किया है but you want to
यू वांट टू हैव अ रिफ्रेशर, आपको फिर से देखना है वो पढ़ के, ओके, तो आप in that case also you can tell me or someone from reception and we'll make that arrangement for you. All right. In addition to that, once the course is completed, हम लोग we issue something called as flexi pass. Okay, so वो flexi pass is valid for 6 months and 6 महीने तक आप पूरा Python course फिर से रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, सो ये हम लोगों ने इसके लिए रखा है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम what happens is someone gets tagged to a project जिसमें Python चाहिए होता है and then due to some reason वो प्रोजेक्ट कभी आता ही नहीं है and time चला जाता है and then one fine day you come to know अरे प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो again you learned Python, you forgot it, you have to use it. तो अगर आपको फिर से रिफ्रेशर चाहिए you can come back to us and in that case हम लोगों को आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, but this offer is valid for 6 months. Okay, so I've got lots of questions in the backlog, but I'm going to go ahead with the Python syllabus and then I'll come back to the questions. Okay, guys? Meanwhile, whatever you want, you can keep on posting. So in Python, we have total of 10 chapters. Okay, so हम लोगों ने ये Python के कोर्स को 10 चैप्टर में डिवाइड किया है and we have created this course in such a way that even if you are aiming for machine learning or you're aiming for automation or you're aiming for Django after Python, okay, so all of this material is sufficient for you to work in any of the fields, okay, बाद में जाके. All right, so to start with हम लोग start करेंगे chapter number 1 से. Here we'll have all the background of Python, क्यों बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, how did the development process go, what was the first version, what was the faulty version, what is the current version, what is the difference between every version. Okay, so some क्या कहते हैं हम लोग इसको बेस वर्क हम लोग यहाँ पे करेंगे. ओके, एंड इन एडिशन टू दैट दिस इज वेयर हम लोग Python इंस्टॉल करेंगे. ऑल राइट, ओके, सो बाय द वे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, किसी को पता है Python का लेटेस्ट वर्जन क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में? क्वेश्चन में पोस्ट कर सकते हो. Python का लेटेस्ट वर्जन एनीबॉडी नोस? नो, इट्स नॉट 3.12. 3.12 तो बहुत आ गया है. No, it's not even 2.6. Yes, it's 3.8. It's 3.8. Okay, so अगर आप जाते हो python.org पे, okay, if you open up your browser and if you go to python.org, okay, so that is the official website for everything that is related to Python. Okay, so नया रिलीज कब आने वाला है, अगला PyCon किधर होने वाला है, everything that you need is there. Okay, वहां पे in the menu sections you will see download, and download में further if you go in sub menu you will see different operating systems. Okay, so at any given point of time in your download section आपको है ना दो downloadables दिखेंगे. One is going to be 2.7 and one is going to be 3.8. Okay, so 2.7 is the most stable version and 3.8 is the most latest version. Okay, now ये दो differences, ये दो अगर versions देखोगे तो differences बहुत ज्यादा है, almost 10 version का difference है, फिर भी ये दोनों versions अभी भी available है for us to use. Okay, now Python is open source. ओपन सोर्स मतलब पाइथन का कोई मालिक नहीं है, जैसे डॉटनेट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट या फिर जावा इज ओन्ड बाय ओरेकल, राइट, वैसे पाइथन का देयर इज नो ओनर एज सच. ओके, इट इज ऑल ओपन सोर्स. सो पीपल आर कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पाइथन. ओके, एंड इसके चलते द थिंग इज दैट एक ही काम करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस. ओके, सम फंक्शंस आर बेटर देन अदर, some functions are more popular. Okay, ऐसे बहुत सारी चीज है. Okay, so
पाइथन को ना आप आपके ऑफिस में जो प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना उसके जैसे ही कंसिडर कर सकते हो। मीनिंग विथ एवरी रिलीज आप क्या करते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ डिफेक्ट है तो डिफेक्ट सॉल्व करते हो, या फिर कस्टमर ने कुछ चेंज रिक्वेस्ट मांगे तो चेंज रिक्वेस्ट डालते हो, फीचर्स डालते हो, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो विथ एवरी passing version of Python, same thing is happening. Okay, they are trying to make it better and better and better and better. Okay, but organizations like banks and all, okay, so these companies or these are organization or these institutes, right, इनका अगर एक बार प्रोसेस सेट हो गया तो वो सेट हो गया, दे डोंट वांट टू मूव अवे फ्रॉम इट। सो इसके चलते देर इज अ डिवीजन दैट हैज हैपेंड, देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बोल रहे नहीं पाइथन 2.7 सबसे स्टेबल है, तो मैं स्टेबल के साथ ही रहूंगा, मैं मेरा सिस्टम क्यों खराब करूं। ओके, एंड देन देर इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग इनोवेट कर करके नए नई चीजें लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज और पाइथन के वर्जन बढ़ रहे हैं। ओके, सो ऐसे करके करके वी हैव टू डिस्टिंक्ट वर्जन, 2.7 एंड 3.8। ओके, 3.x आई शुड से, बिकॉज नया वर्जन 3.9 आ जाएगा। ओके, तो 3.9 लेटेस्ट बन जाएगा। ऑलराइट, नाउ बट मेंटेनिंग ऑफ these two versions is very hectic। एक ही चीज करने के लिए दो अलग वर्जन क्यों मेंटेन करूं? सो दैट इज व्हाई what the community decided that we won't bring a new release in Python 2.x. So 2.7 became the last version in 2.x series, बट फिर भी लोग अभी तक 3.x पे मूव ऑन होने से डर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो जो मेरा सिस्टम 2.7 में काम कर रहा है वो 3.7 या 3.x के साथ काम करेगा नहीं। दैट इज वाई ये दो वर्जन है। ओके, नाउ इन क्लास आई विल बी यूजिंग बोथ द वर्जन्स। Okay, so for Python part I will be using Python 2.7, and for machine learning part I will be using Python 3.x. So whatever is the latest version I'll be using. All right, so when we'll install Python here in the first chapter हम लोग 2.7 install करेंगे, and ये पूरा 10th chapter cover होने के बाद जब भी मैं machine learning start करूंगा, ये होने के बाद हम लोग Python 3.x install करेंगे। Okay, so here you will get a feel of both the worlds. Okay, then in chapter 2 हम लोग देखेंगे Python के basics. Okay, so Python इतना पॉपुलर क्यों है? Because Python is fast. Python fast क्यों है? Because everything in Python is an object. What is an object? ओके, ये सब चीजें क्या है कैसे है ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। Then chapter number 3 will be condition statements and loops. So many a times we have to take lots and lots of decisions, right? And a decision at a time, there could be one condition involved, or there could be a combination of multiple conditions involved, right? So same thing is true in programming world. So you have to take decisions based on some things. तो कंडीशंस कैसे लिखते हैं, डिसीजंस कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, लूप्स कैसे चलाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सो guys, let me tell you, Python is very easy. Okay, Python बहुत easy है। I'll give you a very simple example. अगर मेरे को किसी वेरिएबल में एज स्टोर करना है, okay, अगर मेरे को जावा में लिखना है, so what I'll have to do is I'll have to declare the variable int age, and then age को मेरे को वैल्यू देना पड़ेगा। फिर उसके बाद I cannot store a float in that variable, or I cannot store a string in that variable. Why? Because the variable has been associated with a data type. पाइथन में ऐसा है ही नहीं। पाइथन में योर डेटा टाइप एंड वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो आज आपके वेरिएबल में इंटीजर है, नेक्स्ट लाइन पे आपके वेरिएबल में सेम वेरिएबल में स्ट्रिंग हो सकता है, उसके नेक्स्ट लाइन पे सेम वेरिएबल में कुछ और हो सकता है। इट्स अलाउड, it works. Okay, so Python is very simple. No unwanted rules, no unwanted complication, no unwanted jargons. Okay, ऐसा कुछ नहीं होता है। Okay, so वो कैसे काम करता है we'll see here. Then comes very important chapters, chapter number 4. Okay, functions. Python में 4 टाइप के functions है। Okay, मैं अभी बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, and it is absolutely fine. Okay,
module functions, object functions, built-in functions and user-defined functions. User-defined functions को parameters pass करने के चार तरीके हैं: mandatory parameter, default parameter, args and quarks. Okay, you won't understand, it's fine. ये सब कैसे होता है, काम कैसे करता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में. देन चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग. ऑलराइट, सो whenever you are coding, okay, तो many a times आपको फाइल्स एक्सेस करने पड़ते हैं एंड इट कुड बी फॉर एनीथिंग. मे बी आपके एप्लीकेशन के लॉग जनरेट करने हैं, या मे बी किसी सर्वर पे से फाइल पढ़ना है, उसका एज ए इनपुट लेके कुछ उस पे प्रोसेस करके आगे पुश करना है, राइट. मे बी सिर्फ इनपुट लेके टेस्ट केसेस बना के सूट ट्रिगर करना है. ओके, सो लेने के बात ये है दैट यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइल हैंडलिंग. ओके, सो फाइल्स रीड कैसे करते हैं, फाइल्स में राइट कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को अपडेट कैसे करते हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे. ओके, नाउ if your file is sitting on the same machine, it's fine, but imagine a scenario wherein you are trying to read from or write into a file which is on some other server. In addition to that, the server is really crappy. उसमें पुराने पुराने डिस्क है, 5400 आरपीएम वाले. सर्वर इज क्रैपी, स्लो, ऊपर से आपके नेटवर्क में भर भर के लेटेंसी है, ऊपर से फाइल बहुत बड़ा है. this could be like the worst case scenario, right? So अगर ऐसा scenario है, still how are you going to read files, or still how are you going to write into the files? Okay, how are you going to divide the files into chunks? वो सब हम लोग देखेंगे 5th chapter में. Okay, all right, let's go back to some questions. Can you put, can you guide which way to pursue career? I've written knowledge. Okay, कैवल्य, what I recommend you is, guys, अगर ऐसा कोई specific case है ना कि मेरा situation ऐसा है, मैंने क्या करना चाहिए ऐसा, okay, so what I recommend is कि आप reception के जो numbers है उस पे call करिए. So वहाँ पे मयंक है, मयंक will counsel you. Okay, so he'll analyze what is your current experience, okay, what is your interest, and आप आपके current experience का सबसे ज्यादा advantage लेके कैसे आगे बढ़ सकते हो. okay, but by the way, अगर आपके resume में Linux है ना, nothing like it. okay, जिनको Linux नहीं पता, please थोड़े थोड़े basic commands and all पढ़ना चालू कर दो. but अगर आपको Linux आता है तो Python and Linux is the best combination. What should I do next? Okay, मैंने ऐसा सुना है कि Python is not good for freshers because in Python market job is for experienced person. So my question is that how many chances for freshers? Roshni, amazing question. Okay, and हर डेमो में 50% crowd is fresher. Okay, and सुनो, yes, whatever you've heard is right. Okay, पाइथन में ना ज्यादातर प्रेफरेंस उनको दिया जाता है जिनको पाइथन ऑलरेडी आता है. ओके, सो इफ यू नो पाइथन, आप रेज्यूमे पे डाल सकते हो एंड दैट इज हाउ यू गेट एन एडवांटेज ओवर अदर्स. बट अगर आप फ्रेशर हो तो क्या करोगे, राइट? आपने तो कोई प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया, तो हाउ आर यू गोइंग टू शोकेस दैट यू नो पाइथन? इसके लिए वर्क अराउंड है. ओके, सो आपने जो भी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया है, लेट्स से आप तो बीई के फाइनल ईयर में हो या फिर एमसीए या बीसीए, फाइनल ईयर में जो भी प्रोजेक्ट किया है वही प्रोजेक्ट यू हैव टू रिपीट फ्रॉम स्क्रैच, एंड दिस टाइम यू हैव टू यूज पाइथन. ओके, जो आपने प्रोजेक्ट अगर डॉटनेट में किया या जावा में किया है, सो यू ऑलरेडी नो द फंक्शनैलिटी. Now Python सीखने के बाद you will know the technology Python also. So repeat your project everything from scratch in Python and आपके resume पे existing project हटा दो और Python वाला project डाल दो. Okay, if you are already pursuing final year and project start कर रहे हो तो choose Python as your language. So इससे the advantage you'll get is कि आपको Python पे काम करने को मिलेगा. And if you get to work on Python as a fresher, you are very lucky. Consider yourself very lucky. Okay, I myself, मेरा career start होने के 2 साल के बाद मेरे को Python में जाने का opportunity मिला, and तब से I'm in Python. Okay, so अगर आपको पहले से मिल रहा है, don't lose it. Okay,
So ऐसे करके you can leverage it. Interview person, interview person, what does find us in confidence? Knowledge or English? Everybody knows all are important, but what is important? Roshni, typical fresher wala question. Knowledge is important. I am not speaking in English. I'm speaking in Hindi. फर्क नहीं पड़ता है. Okay, I have 5 years experience. A question from Avinash. Okay, 5 years in Linux. Citric VMware admin wanted to move to development. What will be best for me? All right. So if you are interested in Python and you want to pursue development, yes, it can work. But if so, agar you are from VMware admin background, right? So if you choose to go for DevOps, that is fine too. Mechanical engineer, currently working as assistant professor, data science. Okay, Digvijay, thank you for the question. Okay, so yes, but you have to be, you have to know कि आप non IT background से आ रहे हो, so you are from teaching background, okay? So you will be treated as a fresher, okay? So वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Okay, so Nayan has a question. He says, I am from mainframes. By any chance, are you aware about project and market working on mainframes and Python? All right. Okay. So guys, आजकल आपको ऐसे कॉम्बिनेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे. Okay, why? Because companies are trying to cut down their costs. Okay, जो चीज उनको फ्री में मिल रहा है, okay, उसके लिए they don't want to spend money. Okay, so you will see lot of openings and lot of projects जिसको कहते हैं uh, what was that word? माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स. इसको कहते हैं माइग्रेशन प्रोजेक्ट. मतलब द प्रोडक्ट इज रेडी, ऑलरेडी चल रहा है वो, बट वो कोई एक लैंग्वेज में लिखा है जिसके लिए उनको हर साल का लाइसेंस खरीदना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं. ओके, अगर ऐसा है तो what they'll try to do is they'll try to convert that entire thing into Python. Okay, so yes, Nayan, if you find a project जिसका migration करना है from mainframes to Python, okay, so obviously you will be the first choice because आपको mainframes भी आता है और आपको Python भी आता है. Okay, if I am aware of such question, such program, no, but mainframe का तो नहीं पता, but मेरे को shell to Python, Java to Python वाले बहुत पता है. Okay, just need to know. So Amol has a question. Amol says, need to know weekend online Python training batches will be conducted in future. Okay, so Amol, weekend पे I don't know you're talking about classroom or online. Okay, right now online तो सारे weekdays पे कर रहे हैं हम लोग क्योंकि we are leveraging every day possible. Okay, weekends पे हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं. क्लासरूम ट्रेनिंग होता है 3 घंटे का. ओके, इट गोज फॉर 3 आवर्स एंड अभी तो वी डोंट हैव एनी डेट फ्रैंकली सेइंग कि हम लोग फिर से क्लासरूम कब रिज्यूम करने वाले हैं. ऑनेस्टली इफ यू गो टू आवर इंस्टीट्यूट, हम लोगों ने अभी वहां पे लॉक लगा के रखा है. no one is allowed to go because of this corona thing. Okay, so it's pretty strict out here in Pune. So classroom ka to no idea. How many classes will be in a week? 5 classes, Monday to Friday. 1.5 now, 1.5 hour. Yes, I'm going to share Mayank's number. I'm going to share my number. I'm going to share Jatin's number. Everyone's number I'm going to share, so you can get in touch. Uh, okay. Yes, Python के बाद data science के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ श्रीकांत. Give me some time. Okay. All right. Okay. So once this is done, chapter 5 for file handling is done. हम लोग देखेंगे chapter number 6, modules and packages. Okay, but before going to modules and packages, I jump to chapter number 9.
Okay, chapter number 9 is databases. Okay, मैं डायरेक्टली फिफ्थ या सिक्स चैप्टर के बाद नाइन्थ चैप्टर को जंप करता हूँ इसीलिए बिकॉज by this time by fifth and sixth chapter you guys are pretty ready, you guys understand python, you can solve the programs on your own. Okay, यहाँ तक हमारा बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया होता है. Okay, so this is the time when I introduce you to the project. Okay, project topic. यहाँ तक you have a chance या opportunity to pick a topic for yourself. अगर यहाँ तक आप पिक करते हो वेल एंड गुड, हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर आप खुद का टॉपिक पिकअप नहीं करते हो तो मैं मेरा टॉपिक बताता हूँ. ओके, एंड इन माय टॉपिक आई यूज डेटाबेसेस. ओके, एंड ninth chapter is all about databases. So if I tell you the topic here fifth chapter के बाद and sixth seventh eighth chapter complete करने के बाद I start databases, अगर ऐसा होता है तो बीच में आपको वेट करना पड़ेगा because you don't know databases. That is why to unblock you guys I cover databases first. Okay, moreover chapter number 7 is exception handling and oops concepts. Okay, ये chapter लंबा चलता है. Also chapter number 8 is regular expressions. Okay, ये भी लंबा चलता है. Okay, so that is why to unblock you beforehand I take chapter number 9 before and then I continue with chapter number 7 and chapter number 8 and then I come down to chapter number 10 directly क्योंकि अपना 9 तो already cover हो गया होता है. Yeah, all right. So uh, hook concepts, exception handling, all the things that we have will cover here. Okay. Uh, okay. So one question I want to ask: what is uh, multiple inheritance? Multiple inheritance मतलब क्या होता है? So inheritance में तीन चार टाइप के inheritance होते हैं. Simple inheritance या फिर single कह सकते हो. Then there is multiple inheritance and there is multi-level inheritance. Right? सुना है? तो multiple inheritance क्या होता है? क्वेश्चन सेक्शन में ही आप आपका टाइप करके आंसर डाल सकते हो. इन मल्टीपल वन पेरेंट एंड टू चाइल्ड क्लासेस, क्या बात कर रहे हो? नो. Okay, so Ankita says one child from two parents. Yes, that is what multiple is. So इसके पहले जिन्होंने आंसर था आपने जो बोला था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. ओके, सो मल्टीपल पेरेंट्स वन चाइल्ड मतलब दो चार क्लासेस को डिराइव करके मैं एक क्लास बना सकता हूँ. राइट? So, do you know which language supports multiple inheritance? I mean, which all languages support multiple inheritance? Yes, Dushan C++. Yes. और बताओ, any other language? Bhushan, Java, no, no, no. .NET भी नहीं. Yes, Python does. इसीलिए तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ. Yes, okay. So guys, multiple inheritance is supported only in two languages. It is C++ and Python. Okay. तो फिर .NET हो गया, जावा हो गया, ये लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है क्या? होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट देन वो डायरेक्टली नहीं होता है. फॉर दैट यू हैव टू रिलाई ऑन समथिंग एल्स. राइट? वो समथिंग एल्स क्या है किसी को पता है? इन .NET और इन जावा if I have to implement multiple inheritance, what do I have to leverage? No, that's not it. Yes, yes. नहीं, abstraction is different, Anil. It is interfaces.
Okay, you'll have to use interface to implement multiple inheritance in other languages. It is only Python after C++ which supports multiple inheritance directly. Okay, and one of the very strongest point of Python. Okay, तो ये कैसे काम करता है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ओके, एंड और एक बहुत कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता था जब भी हम लोग कॉलेज में थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, इसमें से एक कॉन्सेप्ट पाइथन में एप्लीकेबल ही नहीं है. वो कौन सा हम लोग देखेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट, सो हम लोग देखेंगे वो सब यहाँ पे. अब once this is done, once this is done, we'll go to chapter number 8, which is all about frameworks, debugging technique, and regular expressions. Okay, so debugging technique मतलब अगर आपको कोड चलाना है एंड आपका कोड चल रहा है but it is giving you wrong answer, it is not failing, it is not giving you error, but it is at the same time not giving you correct answer. In such case you've done a logical mistake, right? तो वो exactly mistake कहाँ पे हो रहा है वो देखने के लिए आपको कोड debug करना पड़ता है. ओके, तो debug करने के लिए कोड हम लोग कोई आईडी यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे जावा के लिए हम लोग एक्लिप्स यूज करते हैं. डॉट नेट के लिए विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं. वैसे ही पाइचाम के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पाइथन के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पाइचाम, तो पाइचाम यूज करते हैं. Okay, but imagine a situation. Okay, you have to debug a Python script. Okay, and वो Python script है deployed on some machine, Linux machine. Okay, and now that Linux machine doesn't even have a UI. All it has is a um, command line interface. Okay, terminal है उस पे बस. And moreover, वो सर्वर बिलोंग करता है कस्टमर को, एंड कस्टमर ने आपको उसका रीड ओनली एक्सेस दिया है. तो अभी आप क्या करोगे उस पे? हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज टू डिबग अ स्क्रिप्ट, राइट? सो वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में. ओके, एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सप्रेशंस. ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, right? So if you have to find out certain key strings from entire file, okay, तो वो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे. रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम लोग we are going to have a look at 8 to 15 different wild characters, उनको कैसे यूज करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं बड़े बड़े, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, we'll move on to chapter number 10. Okay, so I have been saying कि Python में 10, तो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू लेवरेज देम, इनको डाउनलोड कैसे करोगे, इनको इंस्टॉल कैसे करोगे, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, नाउ इन एडिशन टू दिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सेल शीट पार्सिंग. ओके, सो इन द चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग देखा था, या तो वहां पे हम लोगों ने नॉर्मल फ्लैट फाइल्स पार्स किया हो, like a CSV or a .txt file. But an Excel sheet is a different game altogether, right? So actually हम लोग उसको Excel sheet बोलते हैं, but it is actually called spreadsheet. Okay, and spreadsheet में you can add multiple sheets नीचे से, and every sheet is a collection of rows and columns, right? And वो row and column के intersection को हम लोग cell बोलते हैं. That is where we actually write something or read कर सकते हैं. read from an Excel sheet or write into an Excel sheet, तो मेरे को पहले स्प्रेडशीट में जाना पड़ेगा, करेक्ट रो में जाना पड़ेगा, करेक्ट कॉलम में जाना पड़ेगा, एंड देन आई विल बी एबल टू रीड डेटा फ्रॉम possible as easily as we did it for a flat file.
ओके, सो वो कैसे करते हैं? फॉर दैट हम लोगों को यूज करना पड़ता है एक थर्ड पार्टी टूल। ओके, थर्ड पार्टी टूल जिसको लेवरेज करके, जो मॉड्यूल को हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इंपोर्ट करेंगे एंड देन विल बी एबल टू यूज इट। बट बिफोर वी डू दैट विल हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट, राइट? तो वो कैसे करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नाउ once this is done, so there are certain topics, okay, जो which are pretty important and which are not present in the syllabus, okay, but वो भी मैं cover करता हूँ। Decorators, lambda functions, मैप, रिड्यूस, फिल्टर्स। ओके, सो ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हर इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग कवर करते हैं। एंड वंस दिस इज डन, इसके बाद दिस इज द पाइथन पार्ट ऑफ इट, एंड इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। ओके, so for machine learning, this is the syllabus. Okay, so abhi tak what we discussed was this about Python foundation. Okay, so Python foundation consists of Python basics plus Python advanced. Okay, so Python basics and Python advanced हम लोगों ने cover कर लिया होगा by this time, and फिर इधर से आगे हम लोग start करेंगे machine learning. Okay, now people who are interested in machine स्टैट्स पढ़ना चालू कर दो, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थ्योरी, थोड़ा बहुत अगर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ सकते हो तो पढ़ना चालू कर दो, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू। ओके, सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दिस स्टैट्स कि हम लोगों को वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए क्या, रटे हुए होने चाहिए क्या, या मे बी should we know how the formulas are derived? Okay, ideally the answer is no. Okay, ideally the answer is no. क्यों? क्योंकि हर फॉर्मूला के लिए हमारे पास पाइथन में भर भर के फंक्शंस रेडी है। Okay, we just need to call a function, consume it, and work with the output. But with respect to interviews, if you are asked कि इस फॉर्मूला के पीछे का मैथ क्या है, you never know, someone might ask you. Okay, तो यस, आपको वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, उसके सारे वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, वेरिएबल्स कैसे बने, if you know all of this it would be fantastic. Okay, for machine learning, data science, AI should start with statistics right from the beginning. Okay, now whenever we, तो अगर आप देखोगे ना, it's a process. It is not something like writing a program. It's a simple process. Okay, and that process works like this. ये जो अभी दिख रहा है आपके सामने, that is the same process. I hope everyone is able to see uh, my browser. Okay, now I'm no longer in the PDF. Okay, this is where I'm going to start with the machine learning part. Okay, so whenever you have uh, data, okay, first thing that you have to do is you have to, because your data might come from different sources. आधा डेटा एक्सेल शीट से उठाया है, आधा डेटा कहीं से स्क्रैप करके लाया है, राइट? डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है। सो एज अ रिजल्ट सम ऑफ योर डेटा माइट बी मिसिंग, या कुछ कुछ डेटा एक्स्ट्रा हो सकता है जो आपको नहीं चाहिए। ओके, so the first very basic step is data pre-processing. Okay, most exhaustive step. Okay, and what you do is you get all the data, you put it together, you just make it ready कि आगे चल के इस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो ये होने के बाद, ओके, ये करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज करने पड़ते हैं। ओके, numpy, pandas, the most famous libraries that we use to perform this operation. Okay, so numpy deals with arrays, pandas deals with data frames.
Don't worry if you don't understand whatever is coming out of my mouth. It's okay. Okay. Now ये सारे libraries आ रहे हैं हम लोगों को डेटा प्री प्रोसेस करने में हेल्प कर रहे हैं. Now, the very basic thing that we need to do is plot the data. Okay, डेटा आ गया, उसका रिलेशनशिप समझ में आ गया. Okay, बट हम लोगों को अगर कुछ दिखाना है मैनेजमेंट को, okay, तो हम नहीं दिखा सकते हैं. हम लोगों को उनको everything we have to show in form of pictures. Okay, when I say pictures, what I really mean is graphs, different types of graphs. बार चार्ट्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, स्कैटर प्लॉट हो गए, पेयर प्लॉट्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, 25-30 टाइप के अलग अलग ग्राफ्स हैं. ओके, एंड ये ग्राफ्स हम लोगों को प्लॉट कर करके दिखाना पड़ता है अपना डेटा. ओके, सो इफ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग न्यूज ऑन कोरोना, ओके, सो एक स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, every country is behind making the graph flat. ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा है, ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा है. एवरीवन इज वरीड, ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ कोरोना वायरस, ओके, तो वो पहले एकदम धीरे 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 बढ़ता है, एंड देन वन फाइन डे इट राइजेस एक्सपोनेंशियली. एक दिन में केसेस डबल, एक दिन में केसेस ट्रिपल, एंड देन उधर से देयर इज नो टर्निंग बैक. वो ग्रेजुअली ऊपर 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 ही जाता है. Then what they are trying to do is they are trying to what China has managed to do. एक टाइम आएगा जब फिर केसेस स्टेबल हो जाएंगे, एंड देन धीरे धीरे फिर से कम होगा. ओके, अभी तक हम लोग वो फेज में पहुंचे नहीं है. वी आर स्टिल इन द एक्सपोनेंशियल फेज. दैट इज व्हाई एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू मेक द ग्राफ flat. Okay, so whatever data, whatever things we found, okay, so we have to showcase them in form of graphs. Okay, so Python में there are lots and lots of beautiful charting libraries. Okay, so हम लोग charting libraries भी देखेंगे जो हम लोग use करेंगे graphs plot करने के लिए. Okay, then we'll be having look at supervised learning and unsupervised learning. Okay, so these two are the basic techniques जिसमें हम अपने सारे machine learning algorithms को divide कर सकते हैं. Okay, again supervised learning में हम लोग देखेंगे regression. रिग्रेशन में हम लोग देखेंगे तीन टाइप के एल्गोरिथम, सिंपल, मल्टीपल एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे छह अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम, लॉजिस्टिक, के नियरेस्ट मीन, के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मैट्रिक एंड डिसीजन ट्री. ओके, नाउ वी are surrounded with different applications of machine learning. Okay, बहुत सारे machine learning के applications हैं. वीडियो के बाद कौन सा वीडियो आपको पुश करना है. सेम थिंग गोज फॉर नेटफ्लिक्स. आपने कोई कॉमेडी सीरीज देख ली, उसके बाद इट इज गोइंग टू पुश यू अनदर सीरीज ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी वेब सीरीज. अगर आपने प्रिजन ब्रेक देख लिया तो उसके बाद वो आपको मनी हाइस्ट पुश करेगा. अगर आपने मनी हाइस्ट देख लिया तो आपको प्रिजन ब्रेक पुश करेगा. Right, so all of this is what they are trying to do is they are trying to predict you. Okay, so one very basic question I want to ask, ये जो तीन टर्म्स है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये तीनों सेम है क्या? कि कुछ फर्क है इसमें? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड artificial intelligence, AI, because people use these terms in mix and match. कभी भी पाइथन बुक के बारे में बात, कभी भी मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, कभी भी डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं, कभी भी एआई के बारे में बात करता है. तो ये सब सेम है क्या? बिकॉज द कोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मशीन लर्निंग, राइट? पाइथन प्लस मशीन लर्निंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. ओके, so Bhushan says not completely, but they are what? आर के आगे कुछ लिखा ही नहीं आपने.
but they are same. Okay, okay, all right. No, they are not same, guys. Data science is broader, Avinash says. Okay, bro broader than what? Machine learning or AI? All right, check this out. तो है ना, अभी हम यहाँ पे पाइथन. ओके, सो डेटा प्रोसेसिंग. ओके, ऑल राइट, चेक दिस आउट. ओके, सो अगर मैं पाइथन का स्कोप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ओके, सो पार्डन माय ड्राइंग. ओके, सो हम लोग जाते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस. ओके, इसका स्कोप और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. इसका स्कोप और अगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हम जाते हैं इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, एंड इसका स्कोप और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ओके, द फील्ड ऑफ एआई. सो एआई इज द सुपर सेट. एआई सबसे बड़ा है. ओके, एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट है डेटा साइंस. ओके, सो पाइथन यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हो आप. Okay, so what we are going to do is we are going to start with Python. We are going to cover part of data science and then machine learning. Okay, this is where our scope ends. Okay, now for machine learning, ये सारे algorithms है अपने पास. Okay, these are all the algorithms that are available with me. Oops. Okay, so once this is done, once supervised learning is done, we'll go to unsupervised learning. Okay, unsupervised learning में we are going to see at a technique called as clustering. And clustering में हमारे पास है दो algorithms, K means and hierarchical. Okay, once unsupervised learning is done, हम लोग देखने वाले हैं reinforcement learning. Okay, ये NLP नहीं. Okay, so NLP falls under the umbrella of AI. तो ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज फ्रॉम माय अदर बैच, तो ये मैं रिप्लेस कर दूंगा. सो एनएलपी की जगह हम लोग लेने वाले हैं reinforcement learning. So in total 3 plus 6, 9, 10, 11 and unsuper learn, reinforcement learning के दो algorithms. So 13 algorithms we are going to see. Okay. Now once this is done, हम लोगों का जो मॉडल बना है, okay, how is it performing? Is it giving good predictions or is it giving shitty predictions? Okay, तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी मॉडल बनाया है उसको इवेल्युएट किया जाता है. तो हर अलग अलग मॉडल को इवेल्युएट करने के तरीके अलग अलग होते हैं. ओके, सो वो देखेंगे हम लोग. एंड देन फाइनली विल हैव अ लुक एट अ केस स्टडी. केस स्टडी हम लोग कहीं से भी पिक कर सकते हैं, केगल से, एनालिटिक्स विद्या, हैकर रैंक, व्हाटएवर. ओके, सो रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे and then that will be the end of this course. Okay, so timeline wise, uh, 40 to 45 hours for Python and another 30 hours for machine learning, and that is going to be it. Questions?
Anybody wants to add anything? Amit sir, Jatin sir, do you want to add anything? All good, buddy. Okay, what is the cost of the course? Sir, you want to answer? Cost, timing related stuff. I think you can share Nikat's number to her, him or her, so he or she can able to call them directly and discuss about the formalities of an admissions as well as the information about the fees. Okay. All right. Okay. So guys, मैं contact information डाल रहा हूँ यहाँ पे. Okay. My name is and or you can get in touch with Mayank. Sir, I don't have Nikhat's number actually. Can you please tell me while I'll share Mayank's number? So it's eight. Sorry, depends per audio. So it's 855 101 3133. So for all the admission formalities and all, student has to contact Nikhil directly. Okay. After a training, how much will be confident on Python? Avinash, okay. हर केस टू केस अलग होता है. ओके. ऐसे नहीं होगा कि आपको सब कुछ एक ही दिन में आ जाएगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस. ओके. सो स्टडी मटेरियल वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज और गाइडेंस वाइज हम लोग हमारा 110% देते हैं. ओके. स्टूडेंट ने भी अगर 110% दिया, ओके, तो नथिंग लाइक इट. बट अगर स्टूडेंट ने सिर्फ 10% दिया, so it doesn't work out. Okay. And please do not miss classes क्योंकि जब से so this is my third online batch, right? तो जब से हम लोगों ने online batch start किया है, we record every session and we share it. तो इसके चलते students think कि अच्छा recording तो मिलने वाला है, तो it's okay if I skip the class. But do not forget one thing: manual uh, interaction is anyways better than watching the recording over, right? एंड ये जो अपना वेबिनार चल रहा है, इसमें वी केप्ट ऑल द अटेंडीज ऑन म्यूट ऑन पर्पस. बट क्लासेस के लिए हम लोग जूम यूज करते हैं. जूम कोई म्यूट नहीं होता. सो इट इज टू वे डायलॉग. ओके. तो रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हो. वही अगर आप क्लासेस आते हो ऑनलाइन, तो यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन. ओके. So of course it is totally going to depend on your effort क्योंकि क्लास में जितने भी लोग रहेंगे मैं सबको सेम ही सिखाऊंगा, राइट? यस. बेसिक्स फाइन. जो भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, एडवांस कॉन्सेप्ट हो, आपको ये करना पड़ेगा. आपको खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा. बेसिक पाइथन हो, एडवांस्ड हो, या फिर मशीन लर्निंग हो, व्हाटएवर इट इज, आपको करना है. Can you repeat what I should learn for machine learning? Hmm, for machine learning, it is basically
two parts, stats and algorithms. Okay, both of the things I'll be covering in the class. Okay, stats भी cover करने वाला हूँ, algorithms भी cover करने वाला हूँ. What you can do is you can go through basic stats. Okay, जैसे probability कॉलेज में जो पढ़ा था हम लोगों ने वो probability, या maybe you could go through couple of videos from YouTube. Okay, just to brush up your knowledge. Okay, probability पढ़ सकते हो, graph theory पढ़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो. ओके, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन भी अगर पढ़ लिया तो नथिंग लाइक इट. ओके, सो फॉर सेलेनियम डू वी नीड बेसिक और एडवांस? एडवांस, एडवांस. ओके, तो फॉर एनीथिंग जो भी मैंने स्टार्टिंग में 10 ऑप्शंस बताए थे आपको, Django framework for development, Selenium backend automation for testing, DevOps for networking related work. Okay, cloud platform, AWS, Google Cloud, Azure. Okay, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, सबके लिए पाइथन लगने वाला है. इतना सही पाइथन, इतना सारा पाइथन, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके, ये जो 10 चैप्टर्स का सिलेबस बताया है, ओके, ये तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए. ओके, फॉर फी स्ट्रक्चर कॉल निखत और मयंक. All right. So if there are no other questions, I think we can conclude. Okay. One question popped up. After lockdown, how are we going to continue as our offices will start? Okay. So as of now, हम लोगों ने तो ये बैच ऑनलाइन ही रखने का सोचा है. Okay. So even after lockdown, we are thinking of continuing online. Okay. बट अगर क्लासरूम अवेलेबल होते हैं, बिकॉज लॉकडाउन केम आउट सडनली, राइट, तो हमारे ऑनगोइंग बैचेस भी है. सो हमारे ऑनगोइंग बैचेस को हम लोग ऐसे ही बीच में से कट ऑफ करके नया बैच स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट. तो आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिलीवर व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ओके, एंड उसके बाद अगर क्लासरूम्स अवेलेबल है तो मे बी वी कैन थिंक, बट सी, डोंट कोट मी, आई एम नॉट, so I'm not the person who decides the schedule and all. Okay, the schedule, admin people, they decide. Okay, so I am not sure. What I've been told is this: लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये बैच ऑनलाइन ही रहेगा. अभी टाइमिंग्स कैसे होंगे, अपने को ऑफिस जाना होगा एंड ऑल. यस, अग्रीड. सो वो हम So लोग Nikhil, करेंगे डिसाइड. your batch is starting from Monday, and your timing यस, रहेगा batch that would be 8:30 to 10 every day, Monday to Friday. तो अगर मान लो कोई ऑफिस भी यस. जाता है तो डेफिनेटली ही और शी शुड गो आफ्टर 10 o'clock. तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैच को ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे. देयर इज नो प्लान दैट वी कैन मूव दिस बैच ऑफलाइन. हाँ, अगर स्टूडेंट्स को ओके, डाउट्स आते हैं, क्वारीज आती हैं, देन डेफिनेटली दे कैन get into some offline batches to get the syllabus revised a bit, not completely, but हाँ bit. That option we are giving to the student, but ये batch पूरा का पूरा हमारा online ही चलेगा. ओके. No, sir, the question was after lockdown. Even after lockdown also we have the online batch. Because हमने कैसा किया है, we planned for almost 40% of fees slash. तो normal जो इस course का costing है, that is 26,400 if you are going for a classroom program. ऑफलाइन में Okay, ऑलमोस्ट 40 to 45% को ऑफ दिया हुआ है. सो देर इज नो पॉइंट टू right. कीप दिस बैच ऑफलाइन. सो डिस्काउंट ऑफर के साथ ही हम लोग इस बैच को ऑनलाइन ही करेंगे. देर इज नो सच प्लान टू मूव दिस बैच टू ऑफलाइन. Okay, बिकॉज अभी कैसा है कि नोएडा टीम इज ऑल्सो, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नोएडा. नोएडा अच्छा. टीम से भी ज्वाइन किए हैं. तो लेट्स से फॉर पूना Okay, स्टूडेंट्स सो इट्स फाइन, बट नोएडा स्टूडेंट के लिए इट इज वेरी, it's impossible to attend the offline classes. So we prefer that ये बैच पूरा का पूरा हम लोग ऑनलाइन ही रखेंगे. ठीक है. yes. So किसका क्वेश्चन था ये?
Avinash ka. Okay. All right, sir. I think we can conclude then. वो सारे questions हो गए हैं. ठीक है buddy, thank you so much for your time. और अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को फिर भी आता है, so they have the phone numbers, they can call you directly or they can call Nikhat. Yes. ठीक है, so thank you so Yes. much. Okay. Thank you, sir, for Thank such you. an Thank you, people. explanatory session. Thank you. No problem. No problem. Bye bye.